Hello, hello. Hello everyone, welcome to the stream and happy new year. एंड कुछ देर में हम एनालिसिस शुरू करते हैं। हमेशा की तरह पहले टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हमारा ट्रेड राइट अप करेंगे एंड फिर वेट करेंगे फॉर आवर सेटअप टू बी फॉर्म्ड। ओके, सो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड वॉच माय कंटेंट टू गेट स्टार्टेड। सॉरी फॉर द नॉइज वैसे। ओके, तो कुछ देर में शुरू करते हैं। ओके, तो कुछ देर में शुरू करते हैं एंड लेट मी नो अगर स्ट्रीम स्मूथ आ रही है। एंड लेट मी नो। एंड हमारे 109 सब्सक्राइबर हो चुके हैं गाइस। तो अब हमारा नेक्स्ट टाइम है कि हमारे एटलीस्ट 150 सब्सक्राइबर हो, हमारा नेक्स्ट गोल है। तो डेफिनेटली अगर तुम देख रहे हो स्ट्रीम को तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, तो कुछ देर में शुरू करते हैं। 12:30 से शुरू करते हैं एनालिसिस करना एंड देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हो सकता है। ओके, ओके। ओके, तो कुछ देर में शुरू करते हैं हमारा टॉप डाउन एनालिसिस। अभी तो फिलहाल हम वेट कर रहे हैं इस 30 मिनट कैंडल की क्लोज होने का। वैसे देखा जाए तो डेली में इस मार्केट इज सेल एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस लो राइट है एंड उसके बाद वी हैव अ टारगेट राइट देयर। तो ऑन डेली इट्स अ सेल, ऑन 4 आवर इट्स अ सेल एंड ऑन 1 आवर इट्स सेल। तो 12:30 से शुरू करते हैं एंड अगर तुम स्ट्रीम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करो स्ट्रीम को एंड we'll just get started in about 10 minutes. Okay,
तो 10 मिनट में कैंडल क्लोज होने वाली है एंड उसके बाद हम हमारा डाउन एनालिसिस शुरू करेंगे। एंड तब तक अगर तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन है या वैसे कुछ है तो यू कैन आस्क दैट। ओके, ठीक है। तो नया साल है, सब कुछ हम हमारे लेवल से शुरू करने वाले हैं एंड कुछ देर में हम हमारे ईयरली गोल्स को डिस्कस करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी फन डे, तो डेफिनेटली subscribe to this channel. Okay, we'll just get started in 7 minutes. Okay, 5 minutes में कैंडल क्लोज होने वाली है, तो उसी का वेट कर रहे हैं।
तो आज वैसे फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन आई डोंट थिंक सो कि उतना मूवमेंट होने वाला है, बट स्टिल वी विल लुक फॉर आवर सेटअप्स एंड विल सी क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी मार्केट तो सेल की तरफ है, वी हैव रेजिस्टेंस मेड राइट हियर, नाउ एक्सपेक्टिंग कि प्राइस अगेन ये वाला लेवल फिर से टेस्ट करे ऑन डेली। अगर 4 घंटे में देखोगे तो अगेन सेम लेवल है ये वाला, एंड 1 आवर चार्ट में देखोगे तो वी हैव अ क्लीन structure to the left hand side, we just broke this and then we are falling since the morning। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारे पास और 4 मिनट है अभी, तो अगर तुम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करो स्ट्रीम को एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ चेक आउट माई कंटेंट, आई होप यू लाइक इट। न्यूज़ चेक कर लेते तब तक, डू वी हैव एनी न्यूज़ टुडे। अगर तुम देखोगे तो टुडे, ओके, तो आज कोई न्यूज़ है वैसे, शाम को एनएफपी है तो उसे मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट 7। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स है 7 में, तो मैं उसे मार्क कर लेता हूँ एंड कुछ देर में शुरू करता है। ओके, ओके, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा टॉप डाउन एनालिसिस। ओके, तो ओके, लेट्स जस्ट सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, तो यूरोएसडी मैं इन लेवल्स को डिलीट कर लेता हूँ, एकदम शुरू से शुरू करते हैं।
सबसे पहले देखते हैं वीकली में। अगर वीकली में देखोगे तो मार्केट वाज इन अ बुलिश ट्रेंड एंड मार्केट हैज रिसेंटली मेड लाइक अ रेजिस्टेंस राइट देयर। ठीक है, तो मैं उसे मार्क कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा रेजिस्टेंस एंड हमारा मोस्ट रिसेंट जो सपोर्ट है वो ठीक है यहाँ पे, एंड ये मेरा मोस्ट रिसेंट रेजिस्टेंस, मोस्ट रिसेंट रेजिस्टेंस। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये मेरा मोस्ट रिसेंट रेजिस्टेंस। इसको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे डेली की चार्ट में, तो तुम्हें दिखेगा कि हमारे पास एक मोस्ट रिसेंट जो रेजिस्टेंस बना है ठीक है यहाँ पे। उसके बाद मार्केट इज फॉलिंग डाउन एंड टेस्टिंग दिस सपोर्ट राइट देयर, एंड उसके बाद जो हमारा मोस्ट रिसेंट सपोर्ट है ठीक है यहाँ पे। ओके, तो ये हमारे हो गए डेली के रेंज। अगर डेली से एक पिक्चर देखनी चाहे तो मार्केट, हमें लग रहा है कि मार्केट इज गोइंग टू बी अ बुलिश, मार्केट इज गोइंग टू बी बेयरिश। ओके, बिकॉज see this candle were bearish and again this was a minor pullback and market tend to go down after this type of pullbacks. Okay, अगर हम 4 घंटे के चार्ट में देखेंगे, इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे तो we have a most recent support made right here, उसके बाद we have a resistance made right there, recent support made right here. Okay, इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 1 आवर के चार्ट में तो तुम्हें दिखेगा 1 आवर के चार्ट में we made this resistance yesterday, उसके बाद we fell down, we created the support right there, and ever since the support broke market is falling towards this level right there. Okay, तो यहाँ पर एक ट्रेड हो सकती थी व्हेन दिस कैंडल क्लोज, मार्केट यहाँ से हम सेल लग सकते थे ठीक इस वाले लेवल के लिए, बट अगेन हमें उस पर फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है कि अब क्या किया जा सकता है। अगर तुम 4 घंटे के चार्ट में देखोगे तो मार्केट इज काइंड ऑफ लाइक अ बेयरिश, बिकॉज यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से रिटर्न आ रहा है, उसके बाद मार्केट नीचे आया, एक सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर तुम 1 घंटे के चार्ट में देखोगे तो सेम चीज़ हो रही है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो I'm looking for a buy if candle closes above this level right here. Okay, and this will be my buy above level, and this will be my target for my buy above level. Target buy, I'll just manage this, मैं इसे extend कर देता हूँ, extend. ओके, ओके, तो ये हो गया मेरा लेवल। एंड अब मुझे आवरली में देखोगे तो ऑफकोर्स आई हैव अ रेजिस्टेंस, बट यहाँ पर एक सपोर्ट नहीं बना है। तो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज की प्राइस ऊपर जाए, सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस बनाए, उसके बाद अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक होता है देन आई विल टेक अ ट्रेड फॉर हियर, एंड दिस विल बी माय टारगेट 1 right here, and this will be my target 2. Okay, this will be my target 2. Okay, तो basically I'm looking for some kind of structure to go up to test this levels, and उसके बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो I'll take a sell. तो अगर देखा जाए तो 4 घंटे के चार्ट में मार्केट इज लाइक बेयरिश। ओके, 1 घंटे के चार्ट में भी देखा जाए तो मार्केट इज स्टिल बेयरिश, एंड 4 आवर इज स्टिल बेयरिश, डेली इज स्टिल बेयरिश, तो आई एम अगेन बेटिंग ऑन द बेयरिश साइड टुडे, एंड अगर मुझे कोई सेटअप दिखता है तो विल टेक द सेटअप। तो जल्दी जल्दी अब हम करते हैं हमारा, अब हमारा ट्रेड एडअप कर लेते हैं, एंड हम हमारा ट्रेड एडअप कर लेते हैं एंड उसके बाद देखते हैं कि मार्केट किस तरह से फॉर्म होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेली से शुरू करते हैं। तो previous day was kind of bullish but seems like a pullback. Okay, was kind of bullish but seems like a minor pullback. ओके, तो ये हो गया हमारा डेली का जो हमारा प्रीवियस डे पे जो भी हुआ वो मैंने डेली पे आप लिख लिया। अगर हम 4 घंटे के चार्ट में देखें तो यहाँ से चीज़ें थोड़ी क्लियर होती है। वी मेड a solid resistance today at around 7:30 बजे एशिया में काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस बना है। For today H4 made a fresh resistance at 95.42. ओके, 95.42 यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, दिस वाज माय लेवल 95.42. ओके, movement to further bearish movement, no bullish moment until this breaks and टेस्ट। ओके,
तो मैं कोई भी मोमेंट अज्यूम नहीं कर रहा हूँ अंटिल ये वाला जो लेवल है वो हमारा ब्रेक होके टेस्ट करता है। ओके, फॉर बेयरिश साइड देखा जाए तो मार्केट इज ऑफकोर्स बेयरिश ऑन 4 आवर चार्ट। तो टेस्ट फॉर bear side, what am I looking is break of fresh support। ठीक है, इससे मेरा मतलब क्या है, ब्रेक ऑफ फ्रेश सपोर्ट। अगर तुम देखोगे तो ऑफकोर्स ये वाला यहाँ पे एक एरिया बना हुआ था, ये ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट ने इस एरिया को टेस्ट नहीं किया। ठीक है, तो इस यहाँ पे मैं वही बात कर रहा हूँ कि मार्केट शुड क्रिएट सम काइंड ऑफ सपोर्ट, और अगर वो सपोर्ट ब्रेक होता है देन आई टेक अ सेल फॉर दिस लेवल टू फिल। ओके, तो दिस इज आवर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर टुडे। What I'm looking for is a break of fresh support to push price further down to 9160 and then 8932. Okay, so these are our levels for today. To conclusion, I'm looking for sell till 9160। ठीक है, मैं मेंशन कर लेता हूँ 9160। there you go। ठीक है, तो मेरा सेटअप टाइप क्या होगा, मेरा सेटअप होगा, ये होगा हमारा ए प्लस सेटअप, ए प्लस सेटअप ऑन 30 मिनट, 30 मिनट और H1। ओके, तो ये हो गया मेरा लेवल, ये होगा ब्रेकिंग सपोर्ट एंड आई एम गोइंग टू रिस्क अराउंड 0.4%। एंड डू आई फुल्ली एक्सेप्ट द रिस्क आफ्टर द ट्रेड? डेफिनेटली। तो दैट्स इट, हम यही वेट कर रहे हैं एंड या सो डेफिनेटली हमारा जो टॉप डाउन एनालिसिस है वो हो चुका है, हमारा जो टॉप डाउन एनालिसिस है वो हो चुका है, और हमारा जो ट्रेड राइटअप है वो भी रेडी हो चुका है। प्लानिंग इज सिंपल, आई एम लुकिंग फॉर अ फ्रेश सपोर्ट टू बी फॉर्म्ड एंड दिस सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो आई टेक अ सेल एंड या दैट इज इट फॉर आवर टॉप डाउन एनालिसिस। और 4 घंटे वाली कैंडल, ठीक है, सो दैट इज इट फॉर अ सिंपल टॉप डाउन एनालिसिस एंड राइट नाउ वी जस्ट गोइंग टू वेट। ओके, और अगर बाय साइड में देखा जाए तो ऑफकोर्स वी हैव टू वेट फॉर दिस टू ब्रेक, बट अगर वैसा नहीं होता है एंड प्राइस एक फ्रेश रेजिस्टेंस बना के उसको ब्रेक करके टेस्ट करके ब्रेक करती है तो देन आई विल टेक अ बाय। सो देयर यू गो, वी हैव अ सिंपल analysis for euro USD today, and right now we're just going to wait। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है guys तो you can ask and I'll try to answer that। and everyone, all the best for your trades today। एंड हम हमारा जो रीडिंग सेशन है वो शुरू करेंगे 1 बजे से। जो बुक हम रीड कर रहे हैं वो है ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस ऑफ कोर्स एंड या so that is it for the top down analysis and all the very best।
the father. And not only that, Hello. Hello. ओके, थैंक यू। अगर और कोई क्वेश्चन आता है दिमाग में तो डेफिनेटली यू कैन आस्क, और अगर तुम चाहते हो कि मैं कोई पेयर को एनालाइज करूँ तो तुम वो भी पूछ सकते हो। और अगर तुम्हें चार्ट भेजना है मुझे और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा चार्ट को एनालाइज करूँ तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे ट्यूटोरियल दिया है कैसे करता है, वो कर सकते हो। हेलो अमन, हाउ आर यू? एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन एक्चुअली। वैसे तो मैं मंडे से शुरू करने वाला था स्ट्रीमिंग, बट आज मेरे पास टाइम था तो आई थॉट शुरू करता। एंड कल मैं कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा। let's call this woman आई एक्चुअली अग्री विद यू। वैसे लंदन सेशन में आई डोंट थिंक सो क्या ज़्यादा वॉल्यूम होगा, बिकॉज शाम के समय काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एंड अगर उस न्यूज़ में कोई ब्रेकआउट मिलता है देन आई थिंक कोई ट्रेड मिल सकती है। बट टिल देन आई थिंक की मार्केट इज गोइंग टू बी साइडवेज।
Yes, no, I actually follow माय फॉरेक्स फैक्ट्री। रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तुम यहाँ जाओगे एंड फॉरेक्स फैक्ट्री, देयर यू गो, एंड यहाँ पे टुडे सेलेक्ट करोगे तो आज जितनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाती है। जैसे कि आज यूएसडी में एनएफपी है एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो ये एक रिलायबल सोर्स है जो मैं यूज़ करता हूँ। बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा लाइक एड्स वगैरह नहीं है ना मेन टर्मिनल पे, इसलिए इट्स लाइक रियली इजी। हेलो। या मैं नो वरीज, अगर कोई दूसरे क्वेश्चन आते तो तुम वो भी पूछ सकते हो। एंड हम रोज इसी समय पे स्ट्रीम करने वाले हैं फ्रॉम 12:30 टू 3 PM। एंड अभी वैसे डे लाइट सेविंग चालू है इसलिए 3 PM। एंड जब वो ख़त्म हो जाएंगी तो हम 2 बजे तक स्ट्रीम करेंगे। एंड 1 घंटा यहाँ पे बढ़ा देंगे, इट्स लाइक 11:30 टू 2 मे बी।
वेल अभी तो हमने कोई चैनल नहीं बनाया बिकॉज ऑफ कोर्स फॉलोवर्स are कम है, बट हम डिस्कॉर्ड बनाएंगे एज सुन एज वी हिट लाइक 500 subs. अभी राइट नाउ वी हैव लाइक 109 subs, so we are waiting for 500 sub, but right now I'm just keeping it simple. And मेरा टेलीग्राम है, टेलीग्राम में यू कैन हैव वन ऑन वन कन्वर्जेशन इफ़ यू वांट टू. एंड अगर तुम किसी चीज़ में फंसे हुए हो, इट कैन बी मनी मैनेजमेंट, इट कैन बी प्ले बुक, और इट कैन बी लाइक any sort of technical difficulty, you can just ask me. मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ. This right here is my telegram. If you have any question or queries, you can ask there. वेल मैं बहुत यूज़ कर रहा हूँ, एंड राइट नाउ जो हमारा फंडेड अकाउंट है वो है एक माई फंडेड एफेक्स में, जो कि ठीक, जो कि डिसेंट है यूज़ करने में, एंड पे आउट भी ठीक है. एंड उसके बाद जो सेकंड वाला है जो मैंने रिसेंटली परचेज किया है 50K का, वो है माई फंडेड नेक्स्ट माई फंडेड नेक्स्ट, जो कि आई गेस दुबई बेस्ड है. तो उसके साथ अभी तक मेरा पे आउट नहीं आया है. हम उसमें 50K फेज़ वन में है, एंड होपफुली आने वाले 2 महीनों में वो क्लियर हो जाएगा. तो या, these are the two companies. First one is my funded FX and the second one is funded next. मेरा फॉरेक्स माई फॉरेक्स फंड में भी एक अकाउंट था, बट द थिंग इज वो किसी लीगल इश्यूज में आ गया और उसके कारण वो अकाउंट बंद हो गया. तो या दैट.
वेल अगेन मैंने लाइक इस पे पूरा वीडियो बनाया रखा है, बट वैसे जो इंडियन फॉरेक्स ब्रोकर है तो उनके साथ मेरा एक अकाउंट है ऑक्टाफेक्स के साथ, और एक इंटरनेशनली है जो कि है आईसी मार्केट के साथ। एंड इसमें मैं डिपॉजिट एंड विड्रॉल के लिए यूज़ करता हूँ स्क्रेल। स्क्रिल नाम का एक ऐप है जिसे मैं यूज़ करता हूँ। एंड द थिंग इज़, या अगर तुम स्क्रिल यूज़ करते हो, इंटरनेशनल ब्रोकर यूज़ करते हो, एंड स्क्रिल के मदद से अगर तुम विड्रॉल और डिपॉजिट करते हो तो मेक श्योर कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हैवी फीस लगेगी। फॉर एग्जांपल अगर तुम विड्रॉल करते हो तो तुम्हारा छोटे से छोटा विड्रॉल अगर तुम्हें लेना है तो तुम्हें लगभग 500 रुपीज़ पे करना होता है। ओके। एंड लोकल जो बैंक्स है उसका ऑप्शन वो देता नहीं है आईसी मार्केट्स, इसलिए उसके लिए मैं लाइक छोटा मोटा अकाउंट ऑक्टाफिक्स में यूज़ करता हूँ फॉर लाइक डेली एक्सपेंसेस। एंड जहाँ मुझे ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए उसके लिए मैं आईसी मार्केट यूज़ करता हूँ।
Hello, hello, uncle. Hello. Hello, hello.
ओके, हेलो एवरीवन। आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक दिस ट्रेड। द रीजनिंग इज सिंपल। हमने हमारे ट्रेड आइडिया पे लिखा था कि अगर एक फ्रेश सपोर्ट ब्रेक होता है, फॉर एग्जांपल जस्ट आई एम लुकिंग फॉर अ सेल टिल 9160 फॉर बियर साइड। व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज लाइक ब्रेक ऑफ अ फ्रेश सपोर्ट। तो यहाँ पे एक फ्रेश सपोर्ट आया था, उसके बाद ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है राइट है to push the price further down to 91,660 to right here. So I'm just going to open this trade right here. I'm going to take a sell from this point. यहाँ मैं sell stop लगा रहा हूँ and my sell will be this candle's high right there. Okay, right there. Okay, this will be my second target actually right there. ठीक है, तो दिस इज माई ट्रेड टुडे। अभी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं है, मेरा सेल स्टॉप है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ राइट हेयर। ठीक है, तो अभी ट्रिगर नहीं हुआ है। ओके, अब हम एंटर है ट्रेड में। तो एट दिस पॉइंट ये वाला जो टारगेट वन है, यहाँ पे हम ब्रेक इवन जाएंगे एंड उसके बाद जो रिमेनिंग है वो यहाँ तक होल्ड करेंगे। तो ये हमारा हो गया प्लान। अब बात रही कि कौन से साइज़ के साथ मैं एंटर कर रहा हूँ। बिकॉज ये 30 मिनट का सपोर्ट है, इसलिए मैंने जो रिस्क साइज चूज़ किया है इस बारे में, ये है मेरा बी टाइप सेटअप। दिस इज़ माई 0.2% रिस्क। आई एम एंटरिंग दिस ट्रेड विद 0.2% रिस्क। द रीजनिंग इज सिंपल। ओके, एंड अगर यही कैंडल अगर 1 आवर की होती है ना, 1 आवर में अगर ब्रेक होता है वाला स्ट्रक्चर, तो आई वुड हैव एंटर विद अराउंड with at least around 0.4%. Okay, so yeah, that is it. Simple trading setup. अब हमें सिर्फ वेट करना है and yeah, right now we're just waiting. एंड ये बात याद रखना है कि कोई भी ट्रेड का एक फ़िक्स आउटकम नहीं होता। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी या लॉस में जाएगी, बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, देयर इज़ नथिंग फिक्स। इससे मेरा कहने का मतलब क्या है कि जितना भी तुमने रिस्क दिया है पर्टिकुलर ट्रेड को, उसको एक्सेप्ट कर लो एंड तुम्हारी एज में बिलीव रखो। मुझे अपने एज में बिलीव है एंड आई नो कि मेरी 10 में से 7 ट्रेडें प्रॉफिट में जाएगी, बट आई डोंट नो कि कौन सी ट्रेड प्लस में जाएगी कौन सी ट्रेड माइनस में जाएगी। इसलिए मुझे सारी ट्रेडों में जो रिस्क है वो सेम रखना है। उससे क्या होगा कि एंड ऑफ द डे आई विल बी अ विनर। सो दैट इज़ इट, द सिंपल सेटअप। तो अभी वी आर रनिंग एट अबाउट, अभी तो कैंडल से ओपन ही हुई है, तो वी डोंट नो, ऐसा पॉसिबल है कि हम ड्रॉ डाउन में भी जा सकता है। एंड इस ट्रेड को मैं प्लान कर रहा हूँ टू कीप इट ओपन टिल 3:30। ओके, 3:30 तक ये ट्रेड को ओपन रखेंगे। अगर तब तक टीपी आ जाता है तो इट्स ओके, अगर नहीं आता है तो इट्स ऑल्सो ओके। तो दैट इज़ अराउंड 1 आवर होता है। 1 आवर के लिए हम ट्रेड को ओपन रखेंगे एंड विल सी कि हाउ दिस मार्केट परफॉर्म्स। या, एंड रिमेंबर एनीथिंग कैन हैपन एंड आई एम सर्टेन कि मुझे अपने प्रोसेस में बिलीव रखना है, विच इज़ जो अपनी एज है उस पर पूरी तरह से बिलीव रखना है। तो अगर इसका एस एल भी होता है तो आई विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। ओके, बिकॉज रिमेंबर, ओके, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। द रीजनिंग इज रियली सिंपल। सी, 1 आवर में हमारा जो मोस्ट रिसेंट सपोर्ट है वो है ठीक है, तो इस लॉजिक से ये हमारा TP1 हुआ। लेकिन अगर तुम 4 घंटे के चार्ट 4 घंटे के चार्ट में जाओगे, सॉरी डेली के चार्ट में जाओगे, तो यहाँ नोटिस करोगे कि ठीक यहाँ से मार्केट शुरू हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो मोस्ट रिसेंट जो H4 लो बनता है वो है ठीक ये वाला। तो उस लॉजिक से ये मेरा TP है। और इसे अगर फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे तो मेरा जो नेक्स्ट TP आएगी वो आएगी ठीक यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फिब एक्सटेंशन। तो इस तरह से मैंने फिगर आउट किया, बिकॉज ऑफ कोर्स वो डेली में वहाँ से मार्केट शिफ्ट हुआ है इसलिए। ठीक है, या, एंड अगेन दिस इज़ माय
दिस इज़ माई ए सेटअप, इसलिए मैंने इस पे अराउंड 0.2% रिस्क किया, विच इज़ लाइक निग्लेजिबल। सॉरी, मैं थोड़ा रीडिंग सेशन के लिए लेट हो गया हूँ, बट फिर भी हम शुरू करते हैं। तो हम थे, तो हम हैं ट्रेडिंग इन द जोन बुक जो हम रीड कर रहे हैं, और इस वक्त हैं हम चैप्टर नंबर, आई डोंट नो, हमें इस समय चैप्टर नंबर तो नहीं पता, बट पेज नंबर है 154, एंड वी आर रीडिंग हाउ द फंडामेंटल ट्रुथ रिलेट टू स्किल। ओके, तो चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट लाइन है, एनीथिंग कैन हैपन, वाई। ठीक है, ये हमारा लाइक रूल है, मतलब व्हाट इज़ लाइक प्रोफेशनल ट्रेडर थिंक्स अबाउट द मार्केट, ये लाइक एक चैप्टर का टाइटल है। एंड चैप्टर के टाइटल में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एनीथिंग कैन हैपन। सेकेंड है, हमें ये पता होना ज़रूरी नहीं है, मतलब हमें टेक्निकल एनालिसिस हमारा सही होना ज़रूरी नहीं है पैसे कमाने के लिए। ओके, एंड थर्ड थिंग इज there is a random distribution between wins and losses for any given set of variable that defines an edge। उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर तुम एक सिक्का उछालते हो, तो तुम्हें ये तो पता है कि 10 में से 6 बार वो सिक्का लाइक हेड्स देगा या टेल्स देगा, बट तुम्हें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन से कॉइन टॉस में वो तुम्हें लाइक रिजल्ट देगा। तो वो नहीं पता होता, तो उसको बोलते हैं रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विन्स एंड लॉसेस। एंड द लास्ट पार्ट इज सिस्टमेटिक टेक प्रॉफिट। ओके, तो ये सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि एनीथिंग कैन हैपन। एनीथिंग कैन हैपन, वाई? बिकॉज देयर बिकॉज देयर आर ऑलवेज अननोन फोर्सेस ऑपरेटिंग इन एवरी मार्केट एट एवरी मोमेंट। तो इस सेंटेंस से आई गेस राइटर का कहना है कि मार्केट में लाइक कभी भी कुछ भी हो सकता है। वी डोंट नो कि कौन सा बायर एंटर करने वाला है, वी डोंट नो कि कौन सा सेलर एंटर करने वाला है। इसीलिए मतलब मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अचानक से कोई न्यूज़ आ सकती है, अचानक से कोई बड़ा बायर आ सकता है जो प्राइस को यहीं से पलटा दे, एंड ऐसा भी पॉसिबल है कि एक अचानक से सेलर आ जाए जो मेरी टीपी को ट्रिगर ही ना करे और ऑटोमेटिक मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। ऐसा पहले भी हुआ है एंड हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट लाइन पढ़ता हूँ मैं, जो कि है, इट टेक्स ओनली वन ट्रेडर समवेयर इन द वर्ल्ड टू नेगेट द पॉजिटिव आउटकम ऑफ योर एज। जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था, only one, yeah. Regardless of how much time, effort, or money you are invested in your analysis, from the market perspective, these are no exception to this truth. Any expectation that may exist in your mind will be source of conflict and potentially causes you to perceive market information as threatening. तो आई गेस ये वाले पैराग्राफ से राइटर का मतलब होगा कि सी हम जब टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं या किसी भी पेयर को एनालाइज करते हैं, तो हम उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम देते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज देते हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उससे हम अटैच कर देते हैं कि ऑफ कोर्स दिस इज़ गोइंग टू बी अ विनर। बट दैट इज़ अ प्रॉब्लम। द थिंग इज़, अगर तुम इस पर्सपेक्टिव से सोचते हो कि एक पर्टिकुलर ट्रेड में तुम काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो और लाइक तुम एक्सपेक्ट करो कि प्रॉफिट जाएगा, तो हो सकता है कि कई बार तुम्हारे पास एक विनर, और कई बार तुम्हारे साथ हो सकता है कि ये तुम्हारा लाइक अकाउंट लेके चले जाए। तो आई थिंक इस पैराग्राफ से राइटर का मतलब है कि लाइक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो अपनी एज से बढ़ के किसी में भी ज़्यादा लाइक इमोशनली इन्वेस्ट होना किसी भी पोजीशन में इट्स रियली रॉन्ग। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट इज, यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन ऑर्डर टू मेक मनी। तो सेकंड पॉइंट है कि तुम्हें बिल्कुल ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट में क्या होने वाला है पैसे बनाने के लिए। ऐसा कई लोग करते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर सपोज इस एंगल से लेते हैं कि तुम एक बहुत बड़े प्लेयर हो, फॉर एग्जांपल यूर अ बैंक एंड यू हैव अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू ट्रेड।
तो अगर तुम सपोज इस पॉइंट से अगर तुम सेल करना शुरू करते हो, तो मार्केट पे आया, तुमने एक बहुत बड़ी पोजीशन ली, ऑफ कोर्स तुम्हारे मार्केट में आने से काफ़ी वायलेंट मार्केट मूव होगा एंड एक पैनिक की स्टेट क्रिएट होगी, एंड उसके कारण बहुत सारे जो सेलर्स है वो भी मार्केट में एक्टिव हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज यू आर अ सिंगल पर्सन. तो आई थिंक दिस इज व्हाट द राइटर मेंट बाय यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन ऑर्डर टू मेक मनी. ठीक है, तो इसकी रीजनिंग देखते हैं. वाई? बिकॉज देर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विंस एंड लॉसेस फॉर एनी गिवन सेट ऑफ वेरिएबल दैट डिफाइंस एन एज. इससे कहने का मतलब क्या है कि अगेन ये वही बात है, सिक्का अगर तुम एक उछालते हो, एक सिक्का उछालते हो, तो तुम्हें ये नहीं पता होता कि कौन से टर्न में हेड आने वाला है, कौन से टर्न में टेल आने वाला है. जो विन और लॉस है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अराउंड नंबर ऑफ टाइम्स, जिसे तुम एज बोलते हो. ओके. So, in the other words, based on the past performance of your edge, you may know that out of next 20 trades, 12 will be winners and 8 will be losers. What you don't know is that sequence of wins and losses, or how much money the market is going to make available on the winning trades. Okay. तो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं. दिस ट्रूथ मेक ट्रेडिंग अ प्रोबेबली नंबर्स गेम. तो बेसिकली यहाँ पे राइटर बात कर रहा है प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में, एंड वही समझाने की कोशिश की जा रही है इस पैराग्राफ में कि कैसे लाइक जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है लॉसेस और विनर्स के बीच में इज़ टोटली रैंडम. तो इट डजेंट मैटर कि तुम एक ट्रेड में 1 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो या 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, द मार्केट इज़ गोइंग टू ट्रेड योर पोजिशन एज अ ओनली थिंग ऑफ लाइक एन इंफॉर्मेशन. तो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ सॉरी. कीप इन माइंड दैट नथिंग हैज़ मोर पोटेंशियल टू कॉज इमोशनल डिस्कार्ड. Sorry, keep in mind that nothing has more potential to cause emotional discord than our unfulfilled expectation. See, यहाँ पे उसी चीज़ की बात हो रही है, expectations की बात हो रही है. The thing is, अगर हम किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं, फॉर एग्जांपल एक तुम किसी भी पेयर को एनालाइज करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहे हो तुम उस पर, तो तुम्हारी और उस ट्रेड की एक लाइक तुम्हारे बीच में और उस एक पोजीशन के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है, एंड यू स्टार्ट टू एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोजीशन की ये तुम्हें इतना प्रॉफिट देके जाएगी या ये तुम्हें उतना ज़्यादा प्रॉफिट देके जाएगी. तो जब एक्सपेक्टेशन हम ह्यूमंस पे प्रॉब्लम है कि जब हमारी एक्सपेक्टेशन हमारे रिजल्ट से मीट नहीं करती, तो दैट क्रिएट्स डिसअपॉइंटमेंट, दैट क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ लॉस. तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज वी हैव टू क्रिएट अ मेंटल स्टेट where things like this doesn't doesn't affect us. Basically this is my point what I'm trying to make. ठीक है. तो जब हम इमोशनली किसी ट्रेड में इन्वेस्ट हो जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट इज़ नो लॉन्गर गोइंग टू मूव इन द डायरेक्शन, बट इट इज स्टिल होल्ड दैट ट्रेड होपिंग कि मार्केट प्रॉफिट में जाएगा. फॉर एग्जांपल मैं इस ट्रेड के एग्जांपल से समझाता हूँ. इफ़ आई सी अ ट्रेड क्लोजिंग बुलिश, मतलब अगर मुझे कोई कैंडल यहाँ पे बुलिश क्लोज होते हुए नज़र आती है 30 मिनट के चार्ट में, एंड द नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल क्लोजेज अबव that candle's high, I'll close this trade entirely because I know according to my odds अगर मैं उसे कैरी करता हूँ तो इवेंचुअली मेरा एसएल हो जाएगा. तो उसी तरह से ट्रेड करना है. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लाइन पढ़ता हूँ. Emotional pain is the universal response when the outside world expresses itself in a way that doesn't reflect that we expect or believe to be true. ये सेम लाइन है जो मैं अभी पढ़ के सुनाई. उसके बाद है, as a result any as a result any market information that does not conforms our expectations is automatically defined and interpreted as threatening. See, तो यहाँ पे राइटर उसी बारे में बात कर रहा है. कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो मार्केट में तुमने एक्सपेक्ट की है. फॉर एग्जांपल आई वाज थिंकिंग कि मार्केट यहीं से लाइक बेयरिश हो जाएगा, बट इट्स लाइक मेकिंग सम काइंड ऑफ सपोर्ट. ओके. तो इससे लाइक एक थ्रेटनिंग वाला तुम्हारे अंदर एक रिस्पॉन्स आता है. फॉर एग्जांपल जैसे मेरे अंदर आ रहा है कि शुड आई क्लोज दिस ट्रेड, शुड आई नॉट क्लोज दिस ट्रेड. बट अगेन इसका जो फाइट करने का मैकेनिज्म है कि बेसिकली बिलीव इन योर एज. अगर तुम्हारी एज आती है, तुम्हें दिखता है कि ऑफ कोर्स दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, यू हैव टू क्लोज दैट ट्रेड. But right now what I'm going to do, because I believe in my edge, I'm going to wait for the candle to close bullish, and if the next candle closes above the high of the previous candle, then I'll consider closing maybe like 75% of the trade, and that will give me an edge. उसके बाद नेक्स्ट लाइन पढ़ता है. नेक्स्ट लाइन इज एज अ रिजल्ट एनी या so next line is that interpretation causes us to adapt a negatively charged defensive state of mind where we end up creating the very experience we are trying to avoid.
तो यहाँ पे राइटर वही एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे जब हम एक्सपेक्टेशन करते हैं तो माइंड में एक फॉग आ जाता है, तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है वो उसे हम ठीक तरह से इंटरप्रेट नहीं कर पाते. तो बेसिकली दिस इज ऑल अ साइकोलॉजिकल वॉर. आई थिंक दैट्स व्हाट राइटर मीन्स. तो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं. तो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ है सेम. नेक्स्ट पैराग्राफ सेम टॉपिक पे. तो मार्केट इन्फॉर्मेशन इज ओनली थ्रेटनिंग इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू डू समथिंग फॉर यू. सी राइटर यहाँ पे वही बोल रहा है कि जो मार्केट की जो इन्फॉर्मेशन है वो इन इटसेल्फ इज़ न्यूट्रल. ठीक है, उसका कोई उसमें कोई नेगेटिवली चार्ज एनर्जी नहीं है, उसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज एनर्जी नहीं है. इट्स बेसिकली जस्ट इन्फॉर्मेशन जो कि मार्केट तुम्हें प्रोजेक्ट कर रहा है. तुम उसे किस तरह से लेते हो, तुम्हारी माइंड में उसकी इंटरप्रिटेशन कैसी है, उससे तुम्हारा जो रिजल्ट बनता है. तो जो लाइन है, मार्केट इन्फॉर्मेशन इज ओनली थ्रेटनिंग इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग द मार्केट, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू डू समथिंग फॉर यू. मतलब अगर तुम मार्केट से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तू यहाँ से यहाँ जा, या तुम मार्केट को बोल रहे हो कि तू यहाँ से यहाँ मूव कर, दैट इज़ रॉन्ग. एंड दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू लाइक योर इमोशनल कम्फर्ट इफ मार्केट डजेंट मूव इन द सर्टेन वे. ओके, तो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं. Otherwise, if you don't expect the market to make you right, you have no reason to be afraid of being wrong. If you don't expect the market to make you a winner, you have no reason to be afraid of losing. If you don't expect the market to keep going in your direction indefinitely, there is no reason to leave money on the table. ठीक है? If you don't ex- if you don't ex- if you don't expect to be able to take advantage of every opportunity just because you perceived it and it represented itself, you have no right to be afraid of मिसिंग आउट. तो बेसिकली ये पैराग्राफ में जो राइटर है मार्क डगलस, वो यही बोल रहा है कि इट्स लाइक मार्क डगलस है जो यही मतलब कहने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी ट्रेड में, किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेड में इमोशनली अटैच मत हो जाओ. ट्रीट इट एज लाइक सिंपल प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो yeah, just treat it as like simply a probability point of view, and no trade has a fixed outcome. Again, मैं बार बार वही बोलता हूँ, anything can happen in the market, anything can happen in the market, and there is no fixed outcome for any particular scene. For example, market हो सकता है यहाँ से 100 शॉर्ट कर जाए, because there is like uncertainty. तो हमें वो uncertainty पे बिलीव रखना है, and अपनी edge पे बिलीव रखना है. ठीक है. On the other hand, if you believe that all you need to know is number one, the odds are in your favor before you put on a trade. तो यहाँ पे मार्केट यही, मतलब जो मार्क डगलस है वो एज के बारे में बात कर रहा है. मतलब ऑड्स जो है लाइक 10 में से 60 ट्रेड तुम्हारी परफेक्ट हो, उस पर बात कर रहा है. ठीक है. द सेकेंड इज हाउ मच इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू टू फाइंड आउट इफ द ट्रेड इज गोइंग टू वर्क. मतलब अगर ट्रेड तुम्हारे, मतलब बेसिकली ये पॉइंट है प्री डिफाइनिंग रिस्क का. ओके. द थर्ड पॉइंट इज यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी ऑन द ट्रेड. मतलब तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में अगर तुम लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ से बाई की ट्रेड लेते हो या सेल की ट्रेड लेते हो, तो कुछ भी हो सकता है तुम प्रॉफिट में चले जाओ, हो सकता है तुम लॉस में चले जाओ, बट बेसिकली उसके पीछे कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं थी. ओके, तो दैट वाज द पॉइंट. And the fourth point is that ki anything can happen. Basically, anything can happen in the market, and if you are investing too much in a position, that's just wrong. You have to predefine your risk. You have to know that anything can happen. You have to know ki you don't need to have any technical analysis abilities to make profit. And number four is, and again, anything can happen. So next paragraph padhte hain. Then how can the market make you wrong? What in So next paragraph padhte hain. Sorry, मैं repeat कर रहा हूँ. Then how can the market make you wrong? What information could the market generate about itself that would cause your pain avoidance mechanism to kick in so that you exclude that information from your awareness? None. ठीक है. So none that I can think of. If you if you believe that anything can happen and that you don't need to know what is going to happen next to make money, then you will always be right. Your expectation will always be in harmony with the condition as they exist from the market perspective, effectively neutralizing your potential to experience emotional pain. तो basically I think ये वाले टॉपिक से मार्क डगलस का मतलब है कि
या मतलब बेसिकली ये बोल रहा है मार्क डगलस यहाँ पे कि जो अपनी एक्सपेक्टेशन है उसको तुम अगर ज़ीरो कर लेते हो, ठीक है, अगर तुम उस एक्सपेक्टेशन को ज़ीरो कर लेते हो तो तुम मार्केट को, अगर तुम फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट से समझते हैं, अगर तुम बोल रहे हो कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो एंड ऑफ द डे जब तुम्हारी ट्रेड क्लोज करते हो तो मैं जो तुम्हारा बिलीफ है कि एनीथिंग कैन हैपन दैट इज़ हेल्ड ट्रू, मतलब अगर तुम उस ट्रेड में तुम्हारा लॉस होता है तो ऑफ कोर्स दैट इज़ द राइट थिंग यू बिलीव बिफोर, एंड अगर तुम्हारा उससे प्रॉफिट होता है तो अगेन दैट वाज द राइट थिंग यू बिलीव इन बिफोर, तो देयर इज़ नो सेंस कि अगर तुम्हारा एसएल होता है तो तुम्हारा जो मैकेनिज्म है जिससे तुम सैडनेस फील करते हो या डिसअपॉइंटेड फील करते हो वो किक इन हो, ओके। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ता हूँ मैं। बाय द सेम टोकन हाउ कैन अ लूजिंग ट्रेड और इवन अ सीरीज ऑफ लूजर्स हैव द टिपिकल नेगेटिव इफेक्ट? If you really believe the trading is a probability or numbers game, if your edge puts the odd in your favor, then every loss puts you every loss puts you that much closer to a win. When you really believe this, your response to a losing trade will no longer take a negative emotional quality. ठीक है, तो आई गेस इसे हम समझ सकते हैं। ये वाला जो पैराग्राफ है आई थिंक इससे हम अच्छा समझ सकते हैं एक सीज़न के हिसाब से। लेट्स जस्ट कंसिडर कि जो बारिश वाला सीज़न होता है वो होता है हमारा लॉस वाला पीरियड, एंड जो समर होता है वो होता है हमारा प्रॉफिट वाला पीरियड। तो बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब क्या है मार्क डगलस का, कि ऑफ कोर्स लेट्स जस्ट से तुम्हारा अगर तुम एक विनिंग, तुम अपनी एज फॉलो कर रहे हो, सबसे पहले वो क्लियर करता है, तुम अपनी एक क्लियर एज फॉलो कर रहे हो, ओके, तो तुम्हारे अगर तुम पहली ट्रेड लॉस करते हो तो तुम्हारे नेक्स्ट ट्रेड के विन होने का चांस हो जाएगा 50%। फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारा सेकंड लॉस भी हो गया तो तुम्हारा जो थर्ड ट्रेड जो विन हो सकती है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएंगी, एंड वाइस वर्सा। अगर तुम्हें नहीं समझ रहा है तो यू कैन जस्ट कमेंट एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट, ओके। तो थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। देयर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विंस एंड लॉसेस फॉर एनी गिवन सेट ऑफ वेरिएबल दैट डिफाइंस एन एज। व्हाट डिफाइंस एन एज? एज इससे आई गेस इसका मतलब है कि वेरिएबल मतलब फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ टाइम्स यू आर tossing a coin or number of times you're taking a trade, and that on the variable your edge should be in your favor, okay. if every loss puts you if every loss puts you that much closer to a win, you will be looking forward to the next occurrence of your edge, ready and waiting to jump in without the slightest reservation or hesitation. On the other hand, if you still believe that trading is about analysis or about being right, then after a loss you will anticipate the occurrence of your next edge with trepidation, wondering if it's going to work. तो बेसिकली आई थिंक यहाँ पे मैक डगलस का मतलब है कि तुम अगर ट्रेडिंग को इस तरह से ट्रीट करते हो कि हर बार जब तुम राइट हो तुम मनी बनाओगे, तो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। बिकॉज उससे क्या होगा कि तुम अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम्हें लॉस होता है तो तुम्हारे अंदर एक साइकोलॉजी ऐसी बिल्ड हो जाएगी कि ऑफ कोर्स अगर तुम्हें यहाँ पर लॉस हो रहा है तो यू आर गोइंग टू ट्रीट दैट लॉस एज लाइक, तो या तो बेसिकली इट्स लाइक अ गिल्ट ट्रिप, ओके। Okay, so this in turn will cause you to start gathering evidence for for or against the trade. You will gather evidence for the trade if your fear of missing out is greater than your fear of losing. If you will gather information against the trade, you fear of losing greater than your fear of missing out. In either case, you will not be in the most conductive state of mind to produce consistent result. Basically यहाँ पे consistent result को किस तरह से फॉर्म होता है उसकी बात कर रहे हैं, एंड या हम फोर्थ पॉइंट शुरू करते हैं। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ओके, हेलो हेलो, अगर आवाज़ आ रही तो प्लीज़ कमेंट करो। आई डोंट नो मुझे कितने लोग देख रहे हैं बिकॉज मैं यूट्यूब को मॉनिटर नहीं कर रहा हूँ इस समय, तो इट्स हार्ड टू टेल बट डेफिनेटली एटलीस्ट 1% तो होगा। तो हम फोर्थ पॉइंट शुरू करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज एन एज इज नथिंग मोर देन इंडिकेशन ऑफ अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ वन थिंग हैपनिंग ओवर अनदर, ओके। तो एज वही होती है कि अगर 10 बार तुम सिक्का उछाल रहे हो तो इट्स अ पॉसिबल कि उसमें से 10 में से 6 बार
हेड्स आए या टेल्स आए. ओके. Creating consistency requires that you completely accept that trading isn't about hoping, wandering, or gathering evidence one way or the other to determine if the next trade is going to work. Okay, the only evidence you need to gather is whether the variable you use to define as edge are present at any given moment. तो बेसिकली आई गेस यहाँ पे अगेन जो राइटर है वो एक्सप्लेन कर रहा है एज को. एज क्या होती है बेसिकली? जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी है जो तुम्हें एज देती है, मतलब कि तुम एटलीस्ट 5 और 6 टाइम्स मार्केट को बीट करोगे. ओके. तो ईच टाइम अगर तुम ट्रेड लेते हो तो तुम्हें ये कंफर्म करना है कि ये जो पैरामीटर्स है ये मेरी एच को डिफाइन करते हैं या नहीं. सो व्हेन यू यूज़ अदर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैसे कई बार हम अपने आप को मैनिपुलेट करते हैं. ओके, तो उसमें बात हो रही है. तो मैं नेक्स्ट जो लाइन है उसे पढ़ता हूँ, तो ध्यान देना. When you use other information outside the parameters of your edge to decide whether you will take the trade, you are adding random variables to your trading regime. ठीक है, ये लाइन आई गेस वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर तुम ध्यान दोगे तो फॉर एग्जांपल ये एक सेटअप है मेरा, ये मेरा ए प्लस सेटअप है बिकॉज एक सपोर्ट ब्रेक हुआ है. बट इसमें अगर मैं और दूसरे फैक्टर्स को इन्वॉल्व कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम हो गया या कैंडल का साइज हो गया या उस तरह के वेरिएबल, तो वो रैंडम वेरिएबल है जो मेरी एज को ख़राब कर रहा है. एंड ऑफ कोर्स अगर वो रैंडम वेरिएबल्स को अगर मैं कंसिडर करूँ तो मेरी एज डिस्टर्ब हो जाएगी. तो मेक श्योर अगर तुम ट्रेड लेते हो तो कोई भी दूसरे फैक्टर्स को इन्वॉल्व मत होने दो, किसी और की साइकोलॉजी, किसी और का सेटअप से तुम लाइक उससे लाइक हावी मत होने दो. ओके, तो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं. Adding random variables makes it extremely difficult if you if let me repeat. Adding random variable makes adding random variable makes it extremely difficult, if not possible, to determine what works and what doesn't. तो यहाँ पे एक्चुअली बात यही हो रही है कि अगेन अगर तुम रैंडम वेरिएबल को ऐड करते रहोगे अपने ट्रेडिंग एनालिसिस में, तो जो डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी उस लाइक नंबर ऑफ टाइम उसके सही होने की. ओके, तो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं. If you are never certain about the viability of your edge, you won't feel too comfortable about it. To whatever degree you lack confidence, you will experience you will experience fear. The irony is you will be afraid of random, inconsistent result without realizing that your random, inconsistent approach is creating exactly what you're afraid of. I think this is really simple. See, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए. ठीक है, ट्रेडिंग में वी वांट कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट हो, हमारे पास कंसिस्टेंटली 30, 40, 50 डॉलर दिन के आते रहे. बट द थिंग इज़ जो हम हरकत करते हैं उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, हमारे एक्शंस में कंसिस्टेंसी नहीं है. हम रैंडमली ट्रेड को ले लेते हैं, रैंडमली कहीं पर भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं. So I think that is a really big problem that needs to be solved if you wanna be trading consistently. ओके, तो हम लाइक TP1 के करीब है. मैं यहाँ पे 60% अपनी ट्रेड का प्रॉफिट लेना आई गेस ठीक समझूंगा. तो ठीक है, इस पॉइंट में आई एम गोइंग टू क्लोज द 60% ऑफ माई ट्रेड. जस्ट गिव मी अ मिनट, फिर हम कंटिन्यू करते हैं. ओके, तो आई एम गोइंग ओके. तो ये ट्रेड में मैं हमारा हाफ प्रॉफिट है, जो कि हाफ प्रॉफिट है मैं उसे यहाँ पे बुक कर चुका हूँ. अराउंड 60% आई बुक द ट्रेड एंड आई एम गोइंग टू लेट द रिमेनिंग रन टिल अराउंड 12:30 एंड सॉरी 2:30, एंड उसके बाद मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा एंड विल डू आवर जर्नलिंग. या
तो मैं कुछ देर के लिए सीन को बंद कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू जर्नल। ओके, okay. Hello everyone, and basically what I'm going to do is I'm going to close like the 90% of the trade. अभी तो नहीं, around 3 बजे के करीब we're going to close the 90% of our trade. And yeah, that was a quick trade. And okay, hello everyone, I'm going to close the 90% of the trade right here. मैं यहाँ प्रॉफिट ले रहा हूँ एंड there you go, we made around 110 pip with this trade. I'm going to consider this as a winner. The reasoning is the reason मैं ये ट्रेड को यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न ये है कि सबसे पहले जो शाम के समय हमारे पास न्यूज़ है, तो मैं न्यूज़ को अपोजिट डायरेक्शन में प्ले नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो बुक कर रहा हूँ। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है, यानी कि मतलब मैं नेक्स्ट जो ट्रेड करूँगा और न्यूज़ देखूँगा कि न्यूज़ किस तरह से मूव होती है। ऑफ कोर्स ये जो स्ट्रक्चर है पिछले 3 कैंडल से कंटिन्यू हो रहा है, 1 2 3, तो हो सकता है यहाँ से एक माइनर पुल बैक मिले। बट द थिंग इज़ आई एम गोइंग टू क्लोज दिस ट्रेड एंड कॉल इट अ सक्सेसफुल स्ट्रीम। हम यहाँ पे हमारा जो विन रिकॉर्ड है उसे एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो हमारा पहला विनर है मंथ का, तो मैं उससे एडजस्ट कर लेता हूँ।